ठीक है। अच्छा ये धर क्यों आता है सर? ये यहाँ मुझे दिखेगा रूम में। हमारे अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभाव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं। करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन करिए। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर इंद्रधनुष जब रंग बिखेरे जाड़े ने ली अंगड़ाई हो, सिंदूरी जब हुआ हो दिनकर और धरा कुम्हलाई हो, तब हम याद सभी को आए जब छाए मेघ घनेरे हैं, हमने ही तो हवा धूप बारिश के चित्र उकेरे हैं। हमने ही तो हवा धूप बारिश के चित्र उकेरे हैं। तो चलिए आज जाड़े की अंगड़ाई के बीच मौसम विभाग के विभिन्न चित्रों को उकेरते हुए मैं सुषमा सिंह समस्त मौसम प्रहरियों की ओर से आज के ऐतिहासिक दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। वृष्टि सभागार में पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। महात्मा बुद्ध का कथन है, अप दीपो भवा, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। प्रकाश के उजास से ही कहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब भी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज के शुभ अवसर पर हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे सम्मान्य अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं तथा हमारे साथ उपस्थित इन राज्यों के अन्य मान्य अतिथियों का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सारे सदन से अनुरोध करते हैं कि करतल ध्वनि से हमारे इन अतिथियों का स्वागत करें। महात्मा बुद्ध का कथन है, अप दीपो भवा, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। प्रकाश के उजास से ही नवचेतना का संचार होता है और आरंभ किए जाने वाले कार्य को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग
प्रशस्त होता है। आज भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हम मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदय एवं सभी महानुभावों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। कहते हैं ना कि ज्योति प्रतीक होती है उन सभी ऊंचाइयों की जिनको सामान्य मानव प्राप्त करना चाहता है। Because light symbolize energy, light symbolize power, light symbolize imagination, and the light symbolize the strength and unity. दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपोहर्तु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। धन्यवाद। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशा छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो आइए हम भी ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना के मधुर गायन से इस कार्यक्रम को एक सुरीला आयाम देते हैं, जिसे हमारे विभाग की सहयोगी सुश्री बानोश्री बंदोपाध्याय और साथी प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के बीच सुश्री बानोश्री बंदोपाध्याय और साथी। सरस्वती चारते ज्ञान उदय से इस
धन्यवाद। जितनी अनुपम रचना उतना ही सुमधुर गायन। मैं चाहूंगी इस सुंदर सरस्वती वंदना के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दें। हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम। हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम। कांधों पर आसमान उठाकर चले हैं हम। कह दे कोई जाकर घनी रातों के तमस से सूरज हथेलियों पर उगाकर चले हैं हम। These words aptly describe the determination of DG IMD Dr. Mrityunjay Mohapatra ji, popularly known as Cyclone Man of India. You are the permanent representative of India with WMO and its member of Executive Council also. We now request you, sir, to kindly deliver the welcome address. Namaskar, good evening to all of you. Respected Dr. Jitendra Singh Sahab, Honorable Minister of State, Independent Charge, Minister of Science and Technology and Art Sciences, and Honorable Minister of State, Prime Minister's Office, Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, and Department of Space, and the Honorable Chief Guest of this evening. Sri Pushkar Singh Dhamiji Sahab, Honorable Chief Minister, Government of Uttarakhand, Sri Sukhbir Singh Sahab, Honorable Chief Minister, Government of Himachal Pradesh, Sri Manoj Sinha Sahab, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, Dr. M. Ravichandran Sahab, Secretary, Minister of Art Sciences, Sri Shiv Bhan, the Chairman of the committee for organizing this event, my esteemed ex-secretaries of Minister of Art Sciences, ex-Director General of Meteorology of India Meteorology Department, additional DGs, deputy DGs, and all other retired officers of IMD and MOES, invited dignitaries, esteemed invitees, and delegates from different central and state government agencies, scientists and staff members of IMD, MOES, friends from press and electronic media, ladies and gentlemen. On behalf of the whole meteorological fraternity, I take immense pleasure to welcome you to this 148th Foundation Day of India Meteorological Department. As a tradition, every year we celebrate to commemorate our achievements during the past and also to plan for the future. I express my warm greetings to all of you on this occasion. I also extend my warm greetings to all of you on this occasion of Makar Sankranti, Bihu, Lori, and Pongal being celebrated across the country. India Meteorological Department is one of the oldest organizations of not only the country, but also in the world. It serves the people with the weather and climate information in real time, and also provides the past information for planning, preparedness, and socioeconomic activity and development in the region. As all of us know, that India Meteorological Department has moved ahead by leaps and bounds, achieving many targets, and also demonstrating its capability to deal with all types of expectations. If you consider the vision document of India Meteorology Department, it says that no weather hazard should go undetected and unpredicted. There should be optimum utilization of the weather and climate information to maximize its utilization for socio-economic development of the country. Also, we should utilize weather and climate information to harness the natural resources like water, energy, etc. So with these visions, the strategy comes up with the blessings of our Honorable Minister and also the Secretary of Minister of Art Sciences, and strategy updated every year. And as per the plans, we progress further. So therefore, it is an opportunity to all of us to look behind to our achievements, to look behind what happened in the country in the past 1 year, and to proceed further with an ambitious program so that we can meet the expectations of the general public and disaster managers, and hence the socio-economic development of the country. As all of us know that India Meteorological Department has a large network in the country. It also acts as a regional center and global center for the world community.
It works for the global welfare. It provides data to various countries in the region. It acts as a regional telecommunications hub for exchange of data with different countries. It also provides the forecast and advisories to all the countries in South Asia, Southeast Asia, and Middle East. It provides global modeling forecast support to all the countries in this region, especially the Southeast Asia, Pacific region, African region, and many more. I just want to mention that in view of the climate change, India Meteorology Department is the agency which provides the information about the detection of the climate. Whether climate is changing or not, that information goes through India Meteorology Department. I take this opportunity to inform you that annual mean surface temperature over the country as a whole during 2022 has been 0.51 degrees Celsius above the long period average. This year was the fifth warmest year on record nationwide, if you consider the data from 1901. However, this is the lower than the highest warming observed during 2016, which was 0.71 degrees Celsius above the norm. So global mean temperature also has increased, and it is 1.15 degrees Celsius plus minus 0.13 degrees Celsius above the pre-industrial intervals. Even in spite of the fact that this is the La Nina year, where we should have the lower temperature. I'll just go through a glimpse of the achievements in 2022. I want to mention that the science of meteorology is based on the observations. The observation is the first step while dealing with the weather and climate services. So every country, like India also, try to augment the weather and climate observational systems. So in this direction, we have continuously monitored and improved our observational systems. To mention a few, today we are going to inaugurate 4 Dr. radar on the list, so the total number of radars in the country is 7. Similarly, the number of Rangers stations which are being considered for input monitoring stands at 5279 stations. And if you look at various kinds of services being provided, we have tried to augment all the surface observations, upper air observations, radar observations, also satellite support from Indian Space Exploration. With all these observations, we have tried to improve the numerical modeling systems in collaboration with our sister organizations like Indian Institute of Physical Meteorology, Indian National Center for Oceanographic Services, National Center for Meteorology Forecasting, with the guidance from Ministry of Earth Sciences. The number of forecasts is improved, number of sectors getting the forecast from Indian Meteorology Department will also improve. As I mentioned, that there has been significant improvement in forecast accuracy by about 40 to 50% significant improvement in accuracy for all types of meteorological events in recent 5 years compared to previous 5 years. Similarly, if you just look at the dissemination of reaching out the last mile, there is a huge jump in the country with the help of NDMA and MHA. We have come up with a common protocol, and India Department is such an organization which is implemented fast. And for example, we sent about 60 lakhs SMS in the last cyclone to the concerned states. We also came up with various social media platforms and automated programming interfaces so that people can utilize digital information being generated by India Meteorological Department, which can reach out to last mile. You'll be happy to know that there is a public-private partnership, be it agriculture, be it power sector, be it the health sector, or be it the industry. Everywhere you come up with partnership with the public and private organizations, and you'll be happy to know that the communication giants like Google and Apple are utilizing the weather forecast and observation information from India Meteorological Department. We also come up with the implemented collaboration with many agencies within the country and outside. We also conducted many national programs. For one of the important examples is the Swasthya Mission or Swachh Mission, and also the Smart India Hackathon program during this particular year. We also came up with the improvement in our climate services. We have online climate data portal, climate service data portal, where people can download all our information without any hindrance. We have come up with improvement research and development in the country. You'll be happy to know that the India Meteorology Department publishes a journal which is called as Mausam from 1950, and the impact factor of this Mausam has gone up. Now it is 1.05. Not only that, Mausam journal is now online. You have got both physical and also both online version of this program. We have come up with many international programs, be it Regional Climate Center, or be it the Regional Specialized Meteorology Center for Tropical Cyclones, severe weather events, or passport guidance, or be it the South Asia Climate Outlook Forum. And everywhere, IMD has played a dominant role as a global player and regional player to provide the support to all the countries in this region and the public. As a result, the number of loss of lives has decreased not only in India, but also all the countries in this particular region. There is no such cyclone
which has caused death more than 100 in the last 10 years. Now, looking at the future plans, yes, it is a continuous process to expand and enhance the observational network, and IMD will be working towards that. And we have got a very well-defined program to improve the automated weather stations, automated rain gauges, radars, wind profilers. And I want to mention one that by 2025, the country which has got now 37 radars, maybe will have the 62 radars by 2025. Accordingly, with the UDAN scheme of the Government of India, we have also tuned up and we are coming up with all the interventions to provide digital monitoring and forecasting system for aviation safety. And by that way, all the 96 airports are getting information from India Meteorology Department from digital current weather information systems and also the runway visual range, etc. But however, to meet the challenges and requirements in view of the climate change and the disaster management, we have come up with collaboration with all the states also. You'll be happy to know that many states are coming forward to improve the observational system in terms of AWS ARG. To name a few are the Uttar Pradesh, Uttarakhand, Odisha, Tamil Nadu, and many more. We also come up with a decision support system developed for each and every state with the help of the RIMES, India Meteorology Department, and the concerned state. We have come up with the research test bed for thunderstorms. We are also coming together with other ministry sister organizations to have a monsoon test bed in Bhopal. Similarly, we will have the augmented observational network in all the strategic areas, including northeastern states and western Himalayan region. We have come up with some collaboration with DRDO for development of LiDAR and other instruments also. And RSW, that is Upper Air Ascents, which plays a dominant role for our forecast improvement, also has been augmented. And it is being provided with 2 times observations for numerical modeling purposes. The air quality has played a major role nowadays. People think about air quality. Therefore, Minister of Earth Science and India Meteorology Department has come up a long way to improve our air quality monitoring systems in terms of PM2.5 and PM10 in association with the state and central pollution control boards. We also come up with the black carbon aerosol monitoring, surface ozone monitoring, total columnar ozone monitoring, and also we are coming up for Ozone Sunday GPS information set Maitri, and Bharati and Arctic stations are also being augmented. The satellite also plays a dominant role, but utilization of satellite can be ensured only you have got a good processing system. We have established a multi-mission satellite data reception and processing system in India Meteorological Department with the help of Indian Space Organizations. We are going to establish around 1,000 stations with the help of Minister of Panchayat Raj and Survey of India for under these continuously operating reference stations, which can help in improving our weather monitoring at Panchayat level. And information has been already in process to have the Panchayat level information from the block level. At present, we are providing the block level weather information for the farmers and will be going for the Panchayat level information. So we will have also the information augmented for the urban areas. As all of us know that population in urban areas is going to improve by about say 40% by 2030 or 2040. So therefore, we have to meet the challenges due to the urban weather. So therefore, urban weather monitoring and forecasting, especially the disaster management in terms of the urban floods and coastal inundations, etc., are being taken up hugely. We have come up with, at present, with Mumbai and Chennai, and we are augmenting the system for Delhi, Calcutta, and other major cities in the country. But to carry out all these things, India Meteorology Department has introduced the impact-based forecast in the GIS platform. To talk of the impact-based forecast, what we are doing actually, instead of telling what the weather will be tomorrow, we are telling at present what the weather will do tomorrow. In that direction, there is no such severe weather for which impact-based forecast is not being provided for last 3 years, but it is being augmented. In last 2022, we have augmented it with combination of the information from geospatial platforms, information from socioeconomic database, and information from secondary hazards. This is being carried out in a collaborative manner, but still we have to go a long way so that each and every household gets information at any time and every time he desires or she desires. So that is the ultimate goal. At the same time, also sectoral applications like urban sector, power sector, hydrology, and health sector, environment, agriculture, and transport has got a boost during last few years, but however, still there is scope to improve it further. We are improving our numerical modeling systems and also the sector-specific observation system so that we can meet with all the sectoral applications to improve the socio-economic conditions of the country, especially for the farmers and fishermen, the poor strata of the society. The agromet advisory services, as you are telling that, is being provided at present for all the blocks, but the quantitative advisory along with the weather forecast is being provided up to 3,100 blocks. It will be augmented with the ICAR up to 7,000 blocks. And Panchayat level forecast information will be initiated. So as far as climate service is concerned, we plan to have the climate smart products for the stakeholders, especially for energy sector, health sector, disaster management sector,
and water sector. The aviation and meteorological services, as I was telling you, we are planning to have the automated aviation-specific weather observation systems, especially in 8 major airports in 2023 and 2024. We will have the visualization system and GIS-based information for each and every airport. To carry out all these things, there is a need for capacity building in the country, and you will be happy to know that India acts as a regional meteorological training center recognized by WMO and provides training to forecasters from Africa, Asia, and also specifically for South Asia and Southeast Asia and Middle East. We have also started a program called as the Fellowship for the 12 Overseas Trainees that will be provided with the support of WMO. We are a member of the WMO Global Campus, by which all our instructors act as a resource person, and we provide all materials, e-materials, for training of the forecasters across the globe. In case of service sector, yes, as I was telling you, we have to go for a long way with the collaboration with the state governments and various agencies, remote sensing agencies, to have a realistic, very granular, dynamic impact-based forecast and risk-based warning for each and every sector and each and every household and each and every severe weather occurring in the country. So for this purpose, already India Meteorology Department is on the way to develop the decision support system for various severe weathers. Hazard, vulnerability, and risk assessment programs are being taken up with all the Ministry of Earth Sciences constituent sister organizations and also the state organizations and central organizations. We will have a developed weather forecasting system for each and every forecasting agency in the country, including our state centers, regional centers, aviation centers, and specialized forecasting centers. Also, you will be happy to know that with the collaboration of National Adjustment Authority and the Ministry of Home Affairs, a lot of initiatives have been taken up. One of the most important initiatives is the National Cyclone Risk Mitigation Program. JSAB is present here. He is directly involved there. So we have come up with its implementation directly with MHA and NDMA. The system has been established in the India Meteorology Department in 2022, where each block development officer or Tahsildar can open with access and have a geospatial based information in the coastal states with respect to expected hazard, vulnerability, and the risk when a cyclone is crossing the coast. In the similar line, the lightning risk mitigation project is also being taken up by NDMA, and here also IMD will play a dominant role. With respect to the power sector, we come up with a very good understanding of the Ministry of Power, where we provide forecast for all the power distribution companies and power generation companies. But similarly, for the renewable energy sector, like solar and wind, where Government of India has a high stake, and we can take up that, and that is one of the future plan, where we will work together to have a joint action plan. Similarly, India Meteorology Department provides forecast for dengue and malaria and many vector-borne diseases. So there is scope to work together with the Ministry of Health and Family Welfare so that we can have a joint action plan to mitigate this type of disasters arising out of the weather. So there is also support from the Minister of Panchayat Raj and Survey of India. I think we'll have a joint action plan how to reach out each village and each panchayat with our information on general weather and severe weather. So we'll have the responsibility to facilitate access of weather and climate information at every household and at every time. That is the target for 2023. The ultimately providing information on detection of climate change, which is the responsibility of the Government of India, and its attribution studies will be carried out in association with the Minister of Earth Sciences, and every year, like previous year, statement will be provided to IPCC and WMO. So enhancing the joint action plan with the Minister of Environment, Environment, Forest and Climate Change is also very much essential to have the realistic adaptation and mitigation measures based on the science of detection and attribution given by the Minister of Earth Sciences. Once again, I congratulate all of you on this 148th Foundation Day of India Meteorological Department, and I extend a warm welcome to our Honorable Minister, Honorable CM of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Honorable LG of JNK, and all the dignitaries participating in this event, online and offline. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारा मौसम विज्ञान विभाग खूब तरक्की करेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। डॉक्टर एम रविचंद्रन। Dr. M. Ravichandran, Secretary MOES, is known for his excellence in atmospheric and ocean sciences and their application of these sciences for the societal benefits. He is leading the Ministry of Earth Sciences in the ambitious deep ocean mission of Government of India.
We may now request you, sir, to kindly address us. Ladies and gentlemen, Mr. M. Ravichandranji, Secretary, MOES. Honorable Union Minister of State, Independent Judge for Ministry of Earth Sciences, Ministry of Science and Technology, Ministry of State for PMO, DOPT, Department of Space and Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami, Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Sri Sukhvinder Singh, Honorable Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, Sri Manoj Sinha, Director General of IMD, Dr. Mohapatra, my colleagues from IMD and Ministry of Earth Sciences, and past Director Generals of India Meteorological Departments, friends and colleagues. Very good afternoon to all of you. It is indeed a great pleasure to be here as a part of 148th Foundation Day of India Meteorological Department. First of all, wishing you a happy Foundation Day to all colleagues and friends of IMD. And also happy Pongal, Makara Sankranti, Lohri, Bihu. Thank you, IMD colleagues, for your continued immense contribution to the nation for the 147 years, translating science to services. As you all know that IMD is entrusted with the weather and climate forecast at different time scale, right from the shortest time of lightning in few seconds, whatever is happening, to the climate scale. So all the range of spectrum you are able to give forecast. Of course, when you want to give a forecast, you should know the past history. So you know the rhythm of atmosphere in different time scales. And from that, you are able to forecast the weather tomorrow as well as day after tomorrow and future. As you all know that the forecast is having four fundamental pillars. Of course, you all know that one is an observation pillar, and second one is understanding, and the third one is modeling. Whatever you understand, you try to model them and put it into data assimilation of various observations, third pillar. And finally, the fourth pillar is basically forecasting and the dissemination of the information. I think the first pillar, observations, as well as the forecasting and the dissemination pillar, is mainly main job of IMD. I'm glad that in the last 1 or 2 years, many of the observation system has put in place, especially both the in situ observation like AWS and radio sonde and other observations. As you all know that in the recent past, some of the radars also placed for monitoring real-time observation as well as for the nowcast. And many of you know that recently space department has launched OceanSat. In that there is a scatterometer wind. That wind soon it will be available so that we can have a better forecast in assimilating the scatterometer winds in the model. Of course, the understanding part, most of the things, linear system, we have understood fairly well, so we are able to predict the linear system. But there are many non-linearities there. And many of the user department may be requested, you want a better forecast, better forecast. Every time if we go better forecast, then they want a best forecast. It is our endeavor, our IMD's endeavor, to communicate properly what we can predict or what we can forecast, what we cannot forecast. That has to be known to the public as well as the society, as well as journalists, everything. We cannot tell that, we cannot forecast certain things, what is maybe after 1 month, this time, what is the weather will be. We cannot do. We have to communicate to the people, we cannot do. Why we cannot do? Because we have a non-linearity is in place. That non-linearity we have to translate into colloquial language to the common man. We cannot do certain things. So we are doing fairly well in this just 3-4 days. Whatever the forecast, we are very good in that. And the cyclone forecast, we have a long way we have come. We have improved it tremendously, both in terms of track
as well as the intensity, and also the many of the other parameters in the cyclone and other thing. So I think we have to do mainly focus on understanding as well as modeling, both the IITM as well as the NCMRW is doing. So IMD has to focus more on observations and dissemination chain. I think we have to also use for maybe startup or something. We need to start for bringing how do we communicate the information to the common man? Maybe we can have a better mobile app or many other things. I think we need to discuss with the various user group as well as journalists to see how do we communicate to the people, whether our communication is proper. We should not write so much information so that they will get confused. We should have a very clear information. That is what we need to do. As you all know that weather prediction is not simple. I think there are two things are there. One is the deterministic forecast, another is probabilistic forecast. Deterministic forecast is not possible. That we need to communicate. Only we can tell probability. Tomorrow it will rain 2 centimeter rain. Nobody can tell. But tomorrow it may be rain little bit more or whatever the thing. That is what possible in the science. So there is a long way to go for deterministic forecast, which we need to communicate to the people. So that is more important because you are doing wonderful work. But every time when you do 100 times, 100 days forecast, 100 times forecast, 90 days if you do, the people always remember the 10 days what you have done bad forecast. Nobody bothers about 90 days what you have done good. That is more important, which we need to communicate better. Thank you all for joining today's event. I once again wish all IMD colleagues a happy Foundation Day. I am looking forward to work with you all to improve the services in translating science to the services. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस एक अवसर होता है कि हम साल भर की उपलब्धियों, अपने द्वारा किए गए कार्यों तथा अपने प्रयासों की समीक्षा करते हैं और भविष्य के लिए क्या करना है उस पर विचार करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लेटेस्ट ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, एनहांस कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को अधिक सुदृढ़ किया है। सामाजिक पहलुओं के लिए मौसम और जलवायु सेवाओं का उपयोग तथा आपदा प्रबंधन में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। अभी हमें सूचना मिली है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उपलब्धियों के इसी क्रम में आपको यह बताते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग हिमालय पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को मौसम रडार के माध्यम से अपने आंचल में समेटकर नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। हिमालय क्षेत्र में स्थापित अब तक की मौसम रडार की श्रृंखला में आज 4 महत्वपूर्ण कड़ियां और जुड़ने जा रही हैं। उत्तराखंड में सुरकंडा देवी, हिमाचल प्रदेश में जोत एवं मुरारी देवी और जम्मू कश्मीर में बनिहाल टॉप। हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने कर कमलों द्वारा डॉपलर मौसम रडार सुरकंडा देवी का उद्घाटन करें। माननीय जगत सिंह नेगी रेवेन्यू मिनिस्टर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। Transmitter has been installed at Surkunda Devi Ji district Terry Garhwal in Uttarakhand. The addition of these radars will enhance the weather monitoring capabilities of IMD in Uttarakhand. This radar will be very useful for the people of Uttarakhand and for the thousands of tourists visiting the state throughout the year. We are glad to inform that with these installations, IMD radar network has increased to 37 numbers. Jai Hind. हार्दिक धन्यवाद महोदय।
अब हम प्रविष्ट करते हैं हिमालय की गोद में बसे एक और खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश में, जहां इस वर्ष 2 डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए जा रहे हैं। हम एक बार फिर से अनुरोध करेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सुक्खू जी और अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वे अपने कर कमलों द्वारा डॉपलर मौसम रडार को Two-X-band Doppler weather radars built with indigenously developed technology incorporating latest solid-state power amplifier transmitter have been installed at Murari Devi in Mandi district or Jot in Chamba district of Himachal Pradesh. The addition of these radars will enhance the weather monitoring capabilities of IMD in Himachal Pradesh. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब समय है डॉपलर मौसम रडार बनिहाल टॉप के अनावरण का। हम अनुरोध करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और विशिष्ट अतिथि माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे अपने कर कमलों द्वारा डॉपलर मौसम रडार बनिहाल टॉप Today, 4 Doppler weather radars are being inaugurated in western Himalayan region which have been developed under Make in India initiatives of Government of India. All these radars can detect weather phenomenon up to a radial distance of 100 kilometers each. 1X band Doppler weather radar has been installed at Banihal Top in the Union Territory of Jammu and Kashmir in Defense Geoinformatics Research Establishment (DGRE) premises specifically to facilitate Sri Amarnath Ji Yatra. This radar will enhance the weather monitoring and forecasting capabilities of IMD in Kashmir Valley. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मनमानी हो तेज हवाएं, मनमानी हो तेज हवाएं, संग संग हम बहते हैं, बूंदों ने कितने घुंघरू पहने, हर सांस पे गिनते रहते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रगति की ओर अग्रसर है और हमारे देश की लगभग 55% आबादी कृषि पर आश्रित है तथा कृषि पर व्यापक तौर पर निर्भर है। मौसम पर क्षमा कीजिएगा, किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को वैज्ञानिक दृष्टि से मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करने और मौसम पर आधारित एग्रो एडवाइजरी जारी करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रतिबद्ध है। साथियों, हम यह बताते हुए गौरवान्वित हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के विभिन्न स्थानों पर 200 एग्रोमेट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए हैं, जिससे मौसम की निगरानी का दायरा और समृद्ध होगा तथा हमारे देश के किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वे अपने कर कमलों द्वारा इन 22 एग्रोमेट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को देश को समर्पित करने की कृपा करें। Brahman Krishi Mausam Seva of IMD Ministry of Earth Sciences provides weather-based agromet advisory services to the farming community. Under this scheme, 200 agro-automatic weather stations have been installed in the premises of Krishi Vigyan Kendras under the network of ICA.IT is equipped with sensors measuring air temperature, relative humidity, rainfall, sunshine duration along with soil moisture and soil temperature sensors at 10, 30, 70 and 100 centimeter depths. These parameters are highly useful for decision-making, farm-level risk management, including irrigation scheduling. धन्यवाद। Now it's the time to mark a new beginning with the releasing various publications of IMD. सर्वप्रथम हिंदी अनुभाग द्वारा संकलित व प्रकाशित मौसम मंजूषा के 36वें संस्करण का विमोचन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वो भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज मौसम मंजूषा के 36वें संस्करण का माननीय मंत्री महोदय द्वारा विमोचन किया जा रहा है। अत्यंत गौरवान्वित करने वाले पल।
भारत मौसम विज्ञान विभाग की विभागीय गृह पत्रिका मौसम मंजूषा के वर्ष में 2 संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हिंदी दिवस 2015 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मौसम मंजूषा को राजभाषा कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मौसम मंजूषा में प्रकाशित लेखों के लिए अब तक 5 कार्मिकों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। In this series, the next publication we have is IMD's quarterly journal Mausam, whose volume 74, issue number 1 is being launched. As desired by Honorable Minister, I request our India Meteorological Department has been regularly publishing its quarterly scientific international research journal. Okay. I request our former DGs and Professor Dubey Saab to join the dais for release of the publications. If you can work, sir. If you can work. I need some assistance. Sir. सर उधर इधर आइए सर। लाल सर आइए सर। सर ठीक है कैसा लगता है? Next, we have the RSMC report on cyclonic disturbances over the North Indian Ocean during 2022. The Cyclone Warning Division, IMD New Delhi, which acts as Regional Specialized Meteorological Center for tropical cyclones over North Indian Ocean, has brought out a report on cyclonic disturbances over the North Indian Ocean during 2022. This report contains details about the 15 cyclonic disturbances formed over the North Indian Ocean during 2022. The accuracy in both track and intensity prediction registered an overall improvement of 20 to 30%, and landfall point forecast accuracy has been improved by 40 to 70% during recent 5 years from 2018 to 2022 as compared to the previous 5 years from 2013 to 2017. The improved early warning system has enhanced disaster managers to reduce the loss of life due to tropical cyclone to a single or double digits in recent years, not only in India but also in North Indian Ocean rim countries. This report on numerical models performance for the monsoon rainfall forecast during June to September is brought out by Numerical Weather Prediction Division,
IMD New Delhi. This report contains the performance of Multimodal Ensemble MME scheme for district-level forecast of monsoon rainfall during 2022 based on 6 global models from IMD and other centers. The in-house developed MME technique in IMD outperforms the individual model in forecasting the rainfall up to 5 days. Operational heavy rainfall warning skill has been improved with 79% probability of detection, POD, in 2022 as compared to 60% in 2016 in 24 hours ahead forecast. The Nowcast division of IMD has brought out a report on pre-monsoon thunderstorms during 2022. It contains detailed information on daily occurrences of thunderstorm and associated weather during March to June. The number of Nowcast stations has increased from 228 in 2016 to 1125 in 2022. The 3 and 24 hours ahead thunderstorm forecasts have improved with probability of detection of 0.83 and 0.89 in 2022 as compared to 0.71 and 0.31 in 2016 respectively. Climate research. थैंक यू सर। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी को जो किसी वजह से निकलना है, हम उन्हें के वक्तव्य के लिए कृत करते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सम्मानित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय माननीय जितेंद्र सिंह जी, सचिव एम रविचंद्रन जी, निदेशक एम महापात्रा जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हिमाचल प्रदेश को 2 डेवलपर आपने दिए हैं, और इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला। मैं व्यक्तिगत तौर से भी आपसे मिलना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1840 में पहली वेधशाला स्थापित की गई थी, और उसके बाद से आप हमारे साथ लगते पड़ोसी राज्य से हैं। आप जानते हैं कि भौगोलिक हमारी हिमाचल की क्या स्थिति है। कुछ और किन्नौर और लाहौल स्पीति का वैसे तो हमारा 80% इन 3 जो डॉपलर है इससे कवर अप हो जाएगा, लेकिन 30% एरिया किन्नौर और लाहौल स्पीति का ऐसा है जहाँ बादल फटने की घटनाएं होती रहती है। वहाँ भी करने की बहुत जरूरत है। पिछले समय 2-3 साल पहले किन्नौर में बादल फटा, जान मान का नुकसान हुआ, हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट थे उनका नुकसान हुआ। मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे लिए और इस दृष्टिकोण से ध्यान दें, और कुछ जगह हमारा जो वेधशाला है आपकी हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में, यहाँ मौसम की ठीक जानकारी हमें टेम्परेचर की नहीं मिल पाती। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस तरफ भी आप अपना दृष्टिकोण अपनाएं, और जब मैं दिल्ली आपके पास आऊँगा आपसे मैं मिलूँगा भी, और कुछ भी और भी आपदा निधि की बात है, क्योंकि पहाड़ों में जैसे जोशी मठ में हुआ है, हमारे यहाँ भी कई स्थान ऐसे हैं जो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। सही समय पर सही प्लानिंग उस समय की टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं हो सकी। हमारे पहाड़ में लोग जहाँ चाहते थे वहाँ घर बना लेते थे। इस दृष्टिकोण से, और सेस्मिक प्रोन एरिया हमारा हिमाचल प्रदेश है, हम चाहेंगे कि आप आपदा निधि में भी थोड़ी बहुत हमारे बढ़ोतरी कीजिए। मैं आपसे एक और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप हिमाचल भी आइए, और हिमाचल में आपका अपना घर है, आपके भाई हम साथ लगते जिले से है,
कुछ और चीज़ें जो आप डिजास्टर से रिलेटेड है मिलकर भी करेंगे, और यहाँ अगर आप आएंगे तो हम कुछ और अपने अधिकारियों के साथ बैठकर आपसे चर्चा भी करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आज आपने हिमाचल को जो चीज़ दी है उससे हिमाचल का 70% एरिया तो कवर हो जाता है, लेकिन लाहौल स्पीति हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और मेरा ख्याल हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ हमारे स्नो हैं, ग्लेशियर्स हैं, नदियाँ हैं, वो हमारा कोई तकरीबन, और जम्मू कश्मीर के साथ लगता है एरिया, लद्दाख के साथ लगता हुआ एरिया है, किन्नौर का चाइना बॉर्डर के साथ लगता हुआ एरिया है। वहाँ इस दृष्टिकोण से आपको आगे देखने की जरूरत है। अगर आप आदेश देंगे, आपके डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने इनसे अभी भी चर्चा की है, हमारे अधिकारी भी सारे आपके पास बैठे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मिलकर होगी। मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे मिलने के लिए आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप हिमाचल का आने वाले समय में और ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। और अब इसी क्रम में हम बुला रहे हैं श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर जी को, कि वो अपने वक्तव्य से हमें अपने वक्तव्य के लिए आए। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हिमाचल और उत्तराखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्रीगण, सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार श्री एम रविचंद्रन जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी वैज्ञानिक तथा मित्रों, सबसे पहले मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस फाउंडेशन डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। अपने स्थापना के वर्ष 1875 से भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रतिकूल मौसम से आम जनजीवन तथा की आजीविका दोनों की रक्षा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में आई नई गति तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मैं समझता हूं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में निभाई है तथा रक्षा सेवाओं, आपदा प्रबंधन, पावर ट्रांसमिशन, सिविल एविएशन, रेलवे और टूरिज्म सेक्टर में भी एक प्रकार से नई ऊर्जा का संचार किया है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना जरूरी है, सही पूर्वानुमानों और समय पर चेतावनी जारी करके भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश, चक्रवात, आंधी तूफान, कोहरे, बर्फबारी और शीतलहर की चपेट से जान माल के नुकसान को काफी कम करने में लोगों की सहायता की। आज फाउंडेशन डे के अवसर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बनिहाल टॉप पर एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स के उद्घाटन के साथ मैं समझता हूं कि आपके विभाग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधुनिक जम्मू कश्मीर की प्रगति की यात्रा में ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा। मौसम के सही पूर्वानुमान के लिए एक डॉपलर वेदर रडार पहले जम्मू और श्रीनगर में स्थापित किया गया था। बनिहाल टॉप पर आज ये तीसरा डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है और मुझे बताया गया है कि 100 किलोमीटर ऑब्जर्वेशन क्षमता वाला ये रडार वास्तव में जम्मू कश्मीर के निर्माण के कार्यों में और नए जम्मू कश्मीर बनाने में हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सभी वैज्ञानिकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
इंटीग्रेटेड हिमालयन मीटेरोलॉजी प्रोग्राम के तहत हिमालयन क्षेत्र में डॉपलर वेदर रडार्स की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि में मानता हूं। नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी तक पहुंचाकर सभी सेक्टर्स को क्षमतावान और सामर्थ्यवान बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। यह अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र के मौसम के पूर्वानुमानकर्ताओं को मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा और जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग के लोगों के कल्याण एवं सुरक्षा में दी जा रही सेवाओं में काफी हद तक सुधार लाने में हमारी मदद करेगा। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर काफी हद तक एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर और पर्यटन इस पर निर्भर करता है और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आज एक बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर को मिली है। मैं भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों के प्रति भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को ये सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत धन्यवाद। हमारा विभाग आपके सहयोग के लिए आपका हृदय से आभारी है। As the Honorable Chief Minister Uttarakhand had to leave for Delhi for some urgent work, may I now request the Additional Secretary Disaster Management, who is line with us from Dehradun, to kindly say a few words. Additional Secretary DM Uttarakhand. Thank you for providing the opportunity. Namaskar, Honorable Minister Jitendra sir, Secretary Ravichandran sir. I would like to apprise that Honorable CM of Uttarakhand had joined the meeting and was there for half an hour, but he had to leave for Delhi, so weather conditions were going adverse, so he had to take off. Honorable dignitaries and dear audience, on behalf of the Uttarakhand state, I express my sincere gratitude to Ministry of Earth Sciences and IMD for considering to install the Doppler radars in the state. This is second in number, and the third in line is under construction at Lansdowne. We do hope that the inputs are being assimilated in the weather prediction models that enable making weather forecasts more precise and increased lead time for early warnings for severe hydrometeorological events. In pragmatic terms, it has the potential to cut down on disaster mortality and property losses on account of disaster climate risk that take the community often by surprise. Besides, I would like to apprise the Honorable Minister and Secretary Sir that 6 more compact weather radars are being planned to be installed in the state in collaboration with IMD for universal coverage of the state. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। Without saying much, let us now move on the prize distribution and felicitation ceremony. Let us start with our dear children first. Friends, Mausam Bhavan premises was filled with the cheerful chirping of the students of various schools for the art competition held on 22nd December 2022. The budding generation has immense potential to poetry on the papers. It was really task for the judges to select the best among the best. Now we request the Honorable Minister and other dignitaries on the dais to kindly confer these awards. We request winners of the art competition, junior category, to please come up on the stage. First prize in junior category goes to Swarmit Gaur from DPS Faridabad. वो नहीं आ पाए हैं, कृपया तालियां बजा दीजिए उनके लिए. Second prize is being given to Divyanshi Saini from SKV Andrewsganj. SKV Andrewsganj, Divyanshi Saini. The third prize winner of this category is Swastik Singh. वो भी नहीं है. Please give her a big hand. And 2 consolation prizes for the event are being given to Tania Gautam of KV Pragati Vihar and Dania Mukhtar from New Horizon Public School, New Delhi.
Give them a big hand, ladies and gentlemen. Now we request the winners of the senior category to please come up on the stage to collect these prizes. First prize in this category go to Avni Sikdar from Tagore International School, Vasant Vihar. Second award is being given to Avishi Dogra from DPS Faridabad. The third prize is in this category goes to Jivika Krishnan from DPS Dwarka. And the two consolation prizes are being given to Ria Simi from Mothers Global Public School and Shreyas Jha from Lakshman Public School. हमारे देश के भविष्य, ये बच्चे, प्यारे बच्चों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथियों, इसी के साथ अब अगली कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि इस ठीक है बोलना एक मिनट सर आगे इधर बस बोल देते तो आ जाएगी यहाँ से केंद्रीय मंत्री ठीक यहाँ से केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपके नाम से ही जीत शुरू होती है, जो आपके काम में भी उतनी प्रबलता से परिलक्षित होती है। डॉक्टर होने के नाते आपकी मानव जाति की खूब सेवा की है और उस आयाम को और ऊंचे स्थान पर ले जाकर अब आप ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी मानवता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, MD in medicine, he is a medical practitioner, author, professor, news columnist, diabetologist and consultant physician by the profession. He is also author of 8 books including monograms on diabetes. सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम उत्सुक हैं आपके आशीर्वचन सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जब ये परिचय करवा रही थी तो मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछा ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो महामात्रा जी ने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर इनका परिचय भी दीजिए, तो उन्होंने कहा ये सुषमा जी हैं हमारे मंत्रालय में। बहरहाल उसकी आवश्यकता नहीं है, जिस विषय के लिए हम आज यहाँ में एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ दूसरे प्रदेश से भी अधिकारीगण जुड़े हैं, तो इसलिए बहुत समय ना लेते हुए सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है हमारे साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से वहाँ के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और अधिकारीगण ने अपना समय निकाला रविवार के दिन। सर्वप्रथम श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पे। मुझे इस विभाग की ओर से थोड़ी क्षमा याचना करनी है कि काफ़ी समय तक वो प्रतीक्षा करते रहे। हम देख रहे थे स्क्रीन पर लगभग आधा घंटा मुख्यमंत्री जी ने इंतज़ार किया। ही वॉज वेरी काइंड टू बेयर विद अस। लेकिन फिर उन्हें शायद फ्लाइट पकड़नी थी दिल्ली की, और महापात्रा के ही कहने पर उन्होंने मंच छोड़ दिया। तो महापात्रा जी ने कहा कि मौसम बिगड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी तरफ से पहले से ही इस तरह का संदेश था कि उनके पास समय का अभाव रहेगा, फिर भी उन्होंने अपना संबोधन रखा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत सरकार के जो पहले कुछ कार्यक्रम है उनमें से ये कार्यक्रम था जिसमें उनकी शिरकत रही, और जैसा कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनके साथ मिलकर के हमारा विभाग समन्वय करेगा। उनकी RC भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत जल्द हम वहाँ के अधिकारी भी उनके साथ संपर्क करेंगे। जिस प्रकार से कहा गया कि 2 हमारे ये इंस्टॉलेशंस उत्तराखंड में स्थापित हो चुके हैं, 2 हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में इसके परिणाम स्वरूप जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कह रहे थे कि 70% लगभग क्षेत्रफल उससे कवर हो गया। 30% की भी चिंता की जाएगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन इसको गति देंगे
और जिस प्रकार से राज्य सरकार की प्राथमिकताएं होंगी उसके अनुकूल ही काम किया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने अपना समय दिया। जम्मू कश्मीर में भी जैसे बताया गया कि जम्मू और श्रीनगर में पहले से ही था और ये बनहाल में किया गया। इत्तेफाक से ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का अंतिम शोर है जहां पर ये इंस्टॉलेशन हुआ है। लेकिन तीनों ही प्रदेशों में चूंकि इस समय मौसम इस प्रकार का अनुकूल नहीं है कि वहां पर जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाए, कहीं कहीं बर्फबारी है, कहीं कहीं यातायात की दिक्कतें हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल महापात्रो बहुत भावुक थे कि चूंकि आज स्थापना दिवस है, इसी दिन ये कार्यक्रम औपचारिक तौर पर होना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में तीनों स्थानों पर हम बकायदा एक वहां पर जाकर के विजिट करके वहां के स्थानीय अधिकारियों और वहां के स्थानीय लोगों से भी मिल बैठ करके, ताकि जो इसके स्टेक होल्डर हैं उनको समझाया जा सके कि इसकी इंस्टॉलेशन का उनको लाभ क्या रहेगा। अजय कुमार भल्ला जी आ नहीं सके मगर उनका पैगाम हमारे तक पहुंच गया। रविचंद्रन जी हमारे साथी, पृथ्वी मंत्रालय में पृथ्वी विभाग में सचिव, मृत्युंजय जी महापात्रा जी डायरेक्टर जनरल, इतना सब कुछ कह गए, कुछ कहने को रहा ही। इसलिए आपने देखा कि मेरे से पूर्व भी जो बोले हैं वो कुछ अपना ही बोले, क्योंकि जो मुझे इन्होंने लिख के दिया था, मैं तो अभी यूपी से आया हूं, मैंने देखा ये सारा खुद ही पढ़ गए। तो लेकिन अब ऐसा है कि इनकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल इनका बहुत आग्रह था कि मैं ना जाऊं, मैं यूपी के प्रवास पे था, हमने इनकी बात ना सुनी और वहां पहुंचे तो इतनी ठंड हो गई रात को। मैंने कहा भाई ये तो अनयूजुअल ठंड है। बोले साहब महापात्रा जी कह रहे थे कि 6 डिग्री नीचे जाएगा रात को, और कल वाकई चला गया। और अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आज कार्यक्रम में शामिल ना हुए तो कल से, ये शायद परसों से दूसरी वेव शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम वहां से दौड़ते हुए पहुंचे समय पर, ये 4 बजे। लेकिन संजीदगी से ये भी है कि जब मुझे लगा कि इतने इतने बड़े महानुभाव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है, 2 मुख्यमंत्री, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम यहाँ पर उपस्थित रहें। आज बहुत अधिक बातें ये नई इंस्टॉलेशंस के बारे में हुई, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि औपचारिक तौर पर मेरा ये भी एक कर्तव्य और दायित्व रहेगा कि मैं औपचारिक तौर पर स्थापना दिवस की बधाई दूं इस विभाग को, इसके अधिकारियों को। शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि नहीं है कि भारत सरकार के जो सबसे पुराने संस्थान है और संस्थाएं हैं, उनमें से एक है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्योंकि अक्सर ये खबरों में नहीं रहता, ये खबरों में रहता है कि भविष्यवाणी ठीक हुई कि नहीं, लेकिन अपने इतिहास के लिए नहीं। तो इसका एक अपना इतिहास है, अपनी विरासत है। 1864 में, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके पीछे भी इतिहास है, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर के प्रभार में रहा कि शिलांग में एक बहुत बड़ा तूफान, साइक्लोन आया था, और उसके परिणाम स्वरूप जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार थी, वहां पर मंथन हुआ कि किस प्रकार आगे के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले मुझे लगता है बंगाल में ही शुरू हुआ था, अलीपोर में, क्योंकि पूर्वी तट समझा गया कि ज्यादा रिस्क का शिकार है। और तब से लेकर के आज 148 साल हो गए, 150 में से 2 साल कम, तो एक बहुत लंबी यात्रा है। और इसलिए भी कि इस विभाग ने भारत के इतिहास के साथ साथ विकसित होते देखा गया। स्वतंत्रता के पहले का भारत, प्री इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद के पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो भारत के प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के साथ ही मार्च ऑफ आईएमडी हैज हैपेंड विद द मार्च ऑफ द टाइम्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एंड इट इज ऑल्सो a signature of the kind of times that we have lived in. जब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत कम हमारे पास जानकारी के साधन थे, यंत्र थे, तंत्र थे, लेकिन चूंकि आवश्यकता थी, मजबूरी थी, जैसे मैंने कहा कि शिलांग में वो जब बहुत बड़ा साइक्लोन आया, उसके उपरांत वहां पर अकाल पड़ा, तो ये समझा गया कि कोई ना कोई इस प्रकार
का विकल्प रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी बढ़ती गई, शोध बढ़ता गया, अनुसंधान बढ़ता गया, तो इसमें भी धीरे धीरे विकास आया। और आज स्थिति यह है कि लगभग फोरकास्ट को लेकर के लगभग 100% एक्यूरेसी रहती है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 40% वृद्धि हुई है हमारी स्पेसिफिसिटी में। वो इसलिए भी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर फोरकास्ट को लेकर के प्रधानमंत्री जी स्वयं विशेष रुचि लेते हैं, स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी इस प्रकार की संभावना हो तो स्वयं वो बैठक बुलाते हैं, कन्वीन करते हैं। हमारी डिजास्टर रिलेटेड जो मॉर्टेलिटी रेट था वो भी लगभग सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में आ गया है। कहने का तात्पर्य है कि इसको पहली बार इस विभाग को बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है और ये सरकार की प्राथमिकता में आया है। और इसके लिए मैं श्रेय भी देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनका आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनको शायद स्मरण होगा, जब हम बच्चे थे तो नया नया तब तो आकाशवाणी होता था, 2 स्लॉट रखे गए थे, एक सुबह और शाम, मौसम का हाल जिसे कहा जाता था। और विडंबना क्या हो जाती थी कि सुबह 9 बजे मौसम का हाल बोलना था और एक शाम को लगभग 6:30-7 बजे। और वो मेट्रोलॉजी का जो छोटा मोटा कार्यालय होता वो बहुत ज्यादा विकसित भी नहीं रहता। वहां से सूचना आती रेडियो स्टेशन में, और वहां कोई व्हाट्सएप का जमाना ना था, ना मोबाइल थे, तो कोई मैसेंजर सूचना लेकर के आता, वहां पहुंचाता और फिर वहां अनाउंसमेंट की जाती। लेकिन चूंकि समय तय था, लगभग 9 बजे सुबह और शाम को 6:30 बजे के लगभग, शायद वही समय था। महापात्रा जी भी पुराने अधिकारी हैं इस विभाग के, तो कई बार सूचना पहुंचती, कई बार ना पहुंचती। अब आकाशवाणी वालों के लिए मजबूरी रहती कि उसको पूर्ति तो करनी है उस स्लॉट की, तो बंदी बंदाई कई बार अनाउंसमेंट हो जाती कि अगले 24 घंटे में दूर दूर तक गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, वरना आमतौर से मौसम खुश रहेगा। अब आप इसका मतलब कुछ भी निकाल लीजिए और जो भी निकालेंगे वो सत्य होगा कि दूर दूर तक गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, वैसे आमतौर से मौसम खुश्क रहेगा। तो एक तरह का ये मजाक बन जाता था और हम भी लड़कपन में, और कई बार ये भी कहा जाता है कि साहब ये तो मौसम का हाल बोलते हैं अंदर का वातावरण देख करके जिस कक्ष में बैठे हैं। लेकिन आज विज्ञान ने हमें इस प्रकार से संपन्न किया है, और पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने का एक साधन बनाने का एक मुहिम शुरू की है, उसी का ये हिस्सा है कि हम समाज के साथ भी जुड़े हैं। महापात्र जी इस बात के साक्षी हैं, और ये मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा कि अक्सर ऐसा देखने को आया है आजकल कि जब विवाह की तिथियां निकाली जाती हैं तो आईएमडी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आफ्टर द एस्ट्रोलॉजर द नेक्स्ट इज आईएमडी। तो पहले, और ये मैं मात्र बात कहने के लिए नहीं कह रहा, ये आपने अनुभव से कह रहा हूं, और आप इनसे पूछ करके देखिएगा। तिथियां निकाल करके आते हैं माता पिता, 3-4 सेट, फिर यहां से पूछा जाता है कि अल्टीमेट पंडित आप हैं कि इन 4 सेट में से कौन सी तिथि सबसे अनुकूल रहेगी दिल्ली में मौसम के दृष्टि से। तो ये इस प्रकार की विश्वसनीयता जो समाज में पैदा हुई है, वो इसलिए हुई है कि इसके पीछे कड़ा वैज्ञानिक शोध, और जिस प्रकार से भारत ने इसको अपनाया और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया। समय समय पर इसकी अपग्रेडिंग हो रही है। पिछले ही कुछ वर्षों में हमारे नए रडार लगे हैं दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, क्योंकि कोई ऐसा, अब उसमें हमें ये समझना है कि चूंकि दिस इज ए ऑन गोइंग इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जो आज है वो 4 साल के बाद नहीं रहेगा, और 4 साल के बाद जो है उसकी आज शायद हमें कल्पना भी नहीं। अब हम चेन्नई गए, जब बहुत हुआ कि साहब वो पुराना हो गया है रडार, अब वहां नया लगने का आई थिंक द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो मैंने वहां पर वही लोगों को समझाया, वहां पर कुछ मीडिया के भी मित्र थे, क्योंकि वो जहाँ रडार है वहीं पे उसके पास ही लाइट हाउस है। मैं कहा देखो ये लाइट हाउस 200 साल पुराना है, और उस जमाने में क्या सोच के बनाया गया था कि चेन्नई जो जब मद्रास कहा जाता था, समुद्र तट था, बहुत बड़ा हार्बर था,
तो दूर दूर से जो जहाज आए उसको रास्ता कैसे दिखेगा? ऊंचाई पर एक लाइट हाउस, ऊपर से लाइट जलती थी, उसको दिख जाता था कि समुद्र तट होगा। आजकल उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप कहाँ खड़े हैं, दूसरे कहाँ खड़े हैं। तो अब क्या करें? क्या साहब लाइट हाउस ने अपना काम करना बंद कर दिया या हमने उसको छोड़ दिया? तो ये चूंकि समय की गति के साथ साथ ये सारे इवॉल्व हो रहे हैं प्रोसेसेस और फिनोमेना, हमें उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है कि पिछले 4-5 वर्षों में ही हमारे डॉपलर वेदर रडार 15 से बढ़कर के 37 हो गए। और यदि हम कई बार उल्लेख करते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने क्या क्या आयाम हासिल किए हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों सहित प्रमाणित करने वाली ये बात है कि 1947 से लेकर के 2014 तक यदि केवल 15 डॉपलर थे, तो पिछले 8 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर के 15 से 37 हो गई, दुगनी से ज्यादा। और अगले 5 वर्षों में 25 और उसमें जोड़ दिए जाएंगे ताकि सारे सारे देश का पूरा क्षेत्रफल उससे कवर कर दिया जाए। उसके अतिरिक्त अभी महापात्र जी ने आपके आगे बात रखी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मेट्रो यूनिट्स की। और चूंकि कृषि के क्षेत्र को लेकर के काफी अधिक सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि आईएमडी सभी विभागों के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए किस प्रकार किसान को उसकी अनुकूलता के अनुसार काम करने का अवसर रहे, उसको देख करके इस प्रकार के नए विकल्प सोचे जा रहे हैं। उसमें एसएमएस भी ये करते हैं, उसमें अब तो व्हाट्सएप भी है, क्राउड सोर्सिंग भी शुरू कर दी इन्होंने किसान के लिए, कि जहां एक और मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, जहां एक और उन्होंने ड्रोन दिया, वहां एक और आईएमडी भी अपनी तरफ से योगदान करे, ताकि इंटेग्रेटेड एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए हम एक धरती, एक जमीन तैयार कर सके। अब एक बात जिसकी उल्लेख हमारे सचिव रविचंद्रन जी ने किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि अगर आवश्यकता है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ से उस प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। तो कई बार ये हो जाता है कि साहब इन्होंने तो कहा था कि बारिश होगी कि नहीं होगी, और वहां हो गई। लेकिन वो क्या होता क्या है कि ये कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं, जैसे अभी आपने सुना इनका संबोधन सुना आपने आधे पौन घंटे का, ये जो किताबें थी इतनी इतनी आंकड़ों से भरी थी, तो मैंने कहा ये पढ़ेगा कौन? इसके लिए पढ़ने के लिए भी कोई महापात्रा जैसा विद्वान चाहिए। तो इसलिए जो ये कहते हैं वो आम नागरिक की भाषा में कितना पहुंचता है, प्रश्न ये उठता है। अब जैसे इन्होंने कल कहा कि साहब सेकंड वेव आने वाली है, तो आजकल वेव का बड़ा महत्व है। वेव चल जाए तो फिर वो शाम को 9 बजे डिबेट हो जाती है, कोविड की वेव, थर्ड वेव। इन्होंने भी कह दिया सेकंड वेव, कोल्ड वेव। अब उसको रात को 9 बजे बहुत सारी चर्चाएं भी हो गई टेलीविजन पे। और आज ही मुझसे लोगों ने पूछना शुरू किया, साहब धूप निकल आई है, तो वेव कहाँ गई? मैं भी चौंक गया। तो मैंने इनसे पूछा, बोले नहीं साहब मेरा तात्पर्य था कि 18 से होगी, 18 17 जो नेक्स्ट कोल्ड 17th 18th के बाद होगी। लेकिन चूंकि बात मेरे मुख से निकली और उसको पकड़ा गया और बड़ी रोचक लगी, तो लोग बाग में ये शायद धारणा चली गई कि आ गई है, लेकिन वो अभी पहुंची नहीं है, कहीं वो रास्ते में है, उस दिन परसों पहुंचना है। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं ये बात बड़ी गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सुझाव भी दिया सचिव रविचंद्रन जी से, हम एक अच्छा कम्युनिकेशन सेल यहाँ डेवलप करेंगे जो मौसम विभाग की बातों को आम पत्रकारिता की भाषा में पत्रकारों तक पहुंचा सके, और चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो आम नागरिक की भाषा में उस तक पहुंचा सके प्रिसाइसली। बहुत ज्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे रविचंद्रन जी ने ठीक कहा कि 2 वाक्यों में कि इसका असर क्या होगा। हमें ज्यादा ये नहीं कहना कि आवश्यकता कि यहाँ से वेव आएगी, वेस्ट से ये होगा, ईस्ट से ये होगा, साउथ से घूमेगा, फिर नॉर्थ से, तत्परिणाम स्वरूप ये हो जाएगा। उस चक्कर में वो नागरिक समझता है कि शायद आ गया। और हुआ भी यही कल, कि कल इतना हल्ला हुआ, कल शाम को आपने देखा होगा कोल्ड को लेकर के। तो आज सब लोग कहने लगे साहब ये तो ऐसे ही कह गए, आज तो धूप निकले। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। तो हम भी चूंकि इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि नए अनुभव हैं, हमें भी इस प्रकार के पुराने अनुभव नहीं थे, हम इसको में भी सुधार करेंगे
कि किस प्रकार से हम जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसको किस प्रकार से हम सरलता के साथ पत्रकार मित्रों तक भी पहुंचा सके और आम नागरिक तक पहुंचा सके और साथ ही साथ किसान तक भी, जो कि इसके स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर समय समय पर यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो मैंने महापात्रो जी से कहा है कि इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है और क्राउड सोर्सिंग है उसमें ये भी प्रावधान है कि आपके सुझाव भी एंटरटेन किए जा सकते हैं। आप निसंकोच हमें समझाते रहिए किस प्रकार हम सुधार करें ताकि हमारा भी मौसम और आपका भी मौसम ठीक ठाक रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, इसी के साथ अब अगली कड़ी में बताना चाहेंगे कि इस वर्ष राजभाषा शील्ड प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र नागपुर को दी जा रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्री मोहन लाल साहू, प्रमुख प्रादेशिक मौसम विज्ञानी केंद्र नागपुर को, कि वो आए और पुरस्कार ग्रहण करें। वर्क इज वर्कशिप एंड ग्रेट एफर्ट यील्ड्स ग्रेट रिजल्ट। जी सर। The award for the best meteorological center for the year 2022 goes to MC रांची। दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत करें। Now award for the best aviation meteorological service goes to Aviation Meteorological Station बाजपे। जोरदार तालियां। Now we felicitate the best meteorological observatory. The award goes to Meteorological Observatory Barmer। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट आईएमओ बाड़मेर तक जानी चाहिए। And now the best Doppler weather star is being awarded to Doppler weather star station पटियाला। हम आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए गौरवान्वित हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन द ग्रुप सी नॉन एमटीएस गोज टू श्री एन थिरुवल्लमलिया, रेडियो मैकेनिक आरएमसी चेन्नई। बताना चाहूंगी कि किसी कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो चुके हैं। जी आ रहे हैं, जी आ गए हैं, ये उनकी इंफॉर्मेशन थी कि नहीं आएंगे। जी एक बार देख लीजिए सर, आ रहा है तो ठीक नहीं तो फिर बोलिए। जी। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन ग्रुप सी एमटीएस गोज टू श्री अर्जुन सिंह एमटीएस न्यू दिल्ली एंड ऑल्सो श्रीमती मंजीत एमटीएस एमओ भुंतर। मंजीत जी हमारे बीच नहीं आ रही हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वो कहाँ गए? ये रही है। बोलिए। हाँ सर। जोरदार तालियां। Certificate of merit in the group B gazetted scientific category goes to Shri Sujoy Lama, meteorologist from MC Gangtok. And also we have Shri Rizwan Ahmad, meteorologist, NWFC New Delhi, who is being awarded in the same category. Give them a big hand, ladies and gentlemen. Certificate of merit in the group B gazetted non-scientific is being awarded to Shri P.S. Sen Gupta, admin officer from headquarters in New Delhi.
Certificate of merit in the Group B non-gazetted scientific category goes to Miss Anamika Sharma, scientific assistant RMC Guwahati. ये भी किन्हीं कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं. And also to Shri Pankaj Kumar, scientific assistant RMC Chennai. Certificate of merit in the Group B non-gazetted non-scientific goes to Miss Poonam P. Korpade, assistant RMC Mumbai. Certificate of merit in the Group A goes to Shri R. Balasubramanian, scientist E from MC Bhopal. This marks the completion of the award ceremony. I request the dignitaries to kindly take their seat. May I now request Director General of Meteorology, Dr. M. Mrityunjay Mohapatra ji, to kindly felicitate our Honorable Chief Guest, Dr. Jitendra Singh ji. This marks our deep gratitude, love, and respect for you, sir. Secretary साहब का बस फिर वेटर प्लीज. Okay, na? Now again, request Director General of Meteorology to present a token of our gratitude and love and respect to Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Shri S.C. Bhan. Thank you. A very good evening to all of us. We are approaching towards last phase of today's function. Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh ji, Dr. Ravichandran, पृथ्वी विज्ञान सचिव, Dr. Mahapatra, मौसम विज्ञान के महानिदेशक, भूतपूर्व महानिदेशक मौसम विज्ञान, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Earth Sciences, Shri Vishwajit Sahai ji, Joint Secretary, Ministry of Earth Sciences, Shri D. Senthil Pandian, invited guests, my colleague from IMD, MOES, and other ministries of the Government of India. I really feel proud to propose this vote of thanks on occasion of 148th Foundation Day of IMD, which is the first Foundation Day being celebrated during the Azadi Ka Amrit Mahotsav. And on behalf of the Director General of India Meteorological Department, all officers and staff of IMD, and on my personal behalf, I express my profound thanks to Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh ji for gracing this occasion despite his very busy schedule. He in fact was traveling and stayed away. He reached our venue. Thank you very much, sir. We really are
encouraged by your gracious presence and stand immensely benefited with your inspiring word. We assure you, sir, that we further strengthen our efforts towards strengthening the weather and climate services in the country under your able guidance and help the country make more disaster-proof and integrate our efforts towards various technological initiatives of the Government of India, as told by the Honorable Minister. I also thank the Honorable Chief Ministers of Uttarakhand, Himachal Pradesh, and the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, who joined remotely, and their entire administration who was there on remote. Thank you very much, all of you. And next, Dr. M. Ravichandran, the Secretary, Ministry of Earth Sciences. He has always been a source of encouragement for us. And, sir, we thank you very much for gracing this occasion as the President of the function. Your valuable thoughts on this occasion will continue to guide us, inspire us in future and in coming times. Director General Dr. Mahapatra is our first friend, our first critic also, but he has been with us all through all the steps we have been taking over the last more than 3 years. And he was with us during the organization of this function also, right from the very beginning. Thank you very much, the Director General. We also sincerely thank the Additional Secretary and Financial Advisor, Minister of Earth Sciences, the Joint Secretary, Minister of Earth Sciences, officers from the Office of Honorable Minister and the Ministry of Earth Sciences, and also the officers from various other ministries of Government of India who have joined us on this occasion on this Sunday afternoon. Thank you all. Thank you very much. My sincere thanks to all the officers and staff of IMD for their encouraging support, and congratulate all the award winners who are our colleagues who have won the awards. And special congratulations to the young boys and girls from the school who won various competitions. And we wish you all the best for future also. I also thank the management of this auditorium, the CPWD, the service providers, and all the divisions of IMD and MOES who have helped us in better organization of this today's function. Sincere thanks to electronic and print media who could spare time for us. And in the end, very special thanks to the organizing team who had been with me all through from the day one when we started organizing it. It was a bunch of wonderful people. They worked shoulder to shoulder within themselves and also with me. Thank you. Thank you very much. We have reached towards the end of the function. Two announcements to make. The second announcement is that you kindly have tea before leaving. It's arranged there outside. And would request you to remain seated by the time the dignitaries on the dais leave this hall. And the first announcement is that I request all of you to kindly stand for the national anthem. Thank you. Sure. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Kindly take your seats when the Honorable Minister is leaving the dais. Hold for me.
सर ओके, बहुत बढ़िया सर, कर देंगे सर। चलिए जाएंगे चाय कॉफी के लिए, हाई टी के लिए हाँ, कह तो रहे थे, देखिए आपके